So hey guys, and welcome back. Welcome to another live stream. It's I think consistently I'm doing more live streams. It's another day and another live stream, and we'll be discussing about. You all know this. You have seen from the thumbnail itself that we'll be discussing about the transfer daily transfers, which eventually are happening right now currently in the transfer market, and we'll be breaking down those things as well, which eventually we know. I have some information about the transfers, and I've read more reports, and eventually I'll be trying to share those news with you. But the one thing I request from each and every one of you is to like and share this live stream with your friends as well, so that everybody can join us, and eventually all the opinions will be respected. You can eventually comment down in the comment section as well. What do you think about my style of recording, my style of speaking as well? You can tell me, tell me about my mistakes as well, and I can improve as well. So I think if you have some time as well, do subscribe to this channel, and eventually we are on our way to 500 subscribers. Although there's a lot to go, 210 subscribers are still left. It's 290 at this point of time, but eventually we'll be there, and I believe, inshallah, I believe in God and eventually everything. So I think we will do this in the next, till the next one probably. I think so. So let's begin our live stream without wasting any further time. And the first, you will also know this news as well, that Paris Saint-Germain have submitted 50 million bid for Rasmus Højlund as first called by League Whip. Atlanta always wanted at least 70 million plus add-ons. PSG speaking to Rasmus Camp since June, but Man United remain ahead. Man United bid higher as its 60 million package. So eventually PSG are in the race, and PSG have submitted a 50 million bid for Rasmus Højlund, and eventually I think they want to enter this race as well, because obviously we all know the saga of Kylian Mbappé. They don't want to lose themselves in the transfer market, even if Mbappé stays or Mbappé leaves. This summer, I think Mbappé is not showing any signs to leave the PSG this summer at this point of time, which is leaving the PSG transfer window a bit wide open, and I think very much messy in my opinion. Not that messy, like that messy, messy, and they don't know what to do in the transfer window, because they don't really know about the future of Kylian Mbappe in my opinion. And the one thing they really need to sort out is first about the Kylian Mbappe. That is why they're doing everything possible, and eventually they've submitted a bid for Rasmus Højlund as well, and a 50 million bid. I think PSG, in my opinion, PSG would have gone for probably a 70-80 million bid, but they are not splashing cash the way they used to. And if they wanted to, they might have even finished this in one attempt. 75-80 million bid. Eventually, that would have satisfied Atlanta. And the personal terms, in my opinion, and according to reports as well, Rasmus Højlund is flattered by PSG's interest, but his priority is to join Manchester United. It's his dream. So, according to several reports, according to many reports, it is true that Rasmus Højlund is on the verge of joining. Uh, it on not on the verge of. He has agreed the personal terms with PSG as well. So I think PSG and Man United as well, both, and eventually. But I think he wants the move to Manchester United because he is himself a Manchester United fan. He has expressed his desire as well, and I think if any player at this point of time has to make a choice between PSG, I'm not really talking about only about Rasmus Højlund. I'm talking about any player who wants to fulfill his who is young and who wants to go to a proper project. In my opinion, will eventually go to Manchester United, despite the fact United are not that very well developed at this point of time. But United are in that development stage. United are doing very well under Ten Hag, and eventually, despite the fact you won't go as much ahead with the PSG as well and Man United as well in the Champions League, because both the teams eventually bottle out in the Champions League. But in the league, if you want to go to a competitive league as well, so it is in favor of Manchester United. If you want to go into a project which you think will benefit you in the long term, you should go to Manchester United. If you want to
get into a bigger league. Eventually, Liga is way less. It's seventh ranked at this point of time, and eventually, Premier League is the number one league. So I think all the odds, all the everything suits Manchester United at this point of time in this transfer saga. But and the player himself has expressed his desire to join Manchester United, and eventually Fabrizio himself has reported a further confirmation after this report. This report was in the morning, and in the evening, another report came that Fabrizio has reported that after the offer from PSG, Manchester United are holding at new talks, will be beginning new talks with Atlanta over the signing of Rasmus Højlund, and Erik ten Hag wants him, and he wants the player to be there with him before the first match of August. And eventually, this is a report as well of Samuel Luckers, who is a mouthpiece of Manchester United. You all know this fact. He is one of the top tier journalists of Manchester United, and eventually he's an insider. You can say not a journalist; he's an insider of Manchester United. So MUFC are confident of signing Rasmus Højlund in time for their first game of the Premier League season against Wolves. Samuel Luckers. So I think United can sign him, and eventually, in my opinion, things will really be interesting in the next few days. I think PSG are not, according to several reports which I have read at this point of time. I know my reports might be contradicting with the reality as well, because what the media tells you is not always true. You always know the fact, because backdoor there are several things which eventually you don't know are happening. And I think according to my reports, according to the reports which I have read, PSG are not looking to hijack this deal at any point of time. Yeah, they know they can hijack this deal if Rasmus Højlund comes to United. But eventually, if they wanted to clearly hijack this deal, they would have gone with a 70 million, a perfect offer, and would have gained the services of Rasmus Højlund. But they are. I think this might lead to a bidding war as well, but I don't think so. Both the teams would want to go into a bidding war, because every team nowadays doesn't wants to go into a bidding war eventually, because it drives the price of the player higher, and eventually the expectations then eventually go higher, and the worth is not that much of a player until and the only party which benefits is the selling party. Eventually Atlanta will be the beneficial, and neither PSG nor Manchester United would be beneficial. Hello bang bang bhai, hello, how are you? uh, कैसे हो भाई? आप भी कुछ सवाल पूछ सकते हो, एंड इवेंचुअली you have seen the game of United versus Real Madrid as well. So do ask me questions as well. You can express your opinions as well. So Rasmus Højlund, coming back to him, I think if PSG would have wanted to wants Manchester United by I think he will come to Manchester United. Yeah, eventually that is written in the stars. I think PSG don't. I think the way PSG are operating in the transfer market for that striker department, because Mbappe's future is uncertain. So I think they don't know what they have to do and when they have to make those moves, and eventually they're trying to trying to open their tabs on every player, and eventually Rasmus Højlund is one of those. They have put in an offer as well. They are keeping their tabs open on Harry Kane as well. So I think Rasmus Højlund by आपको Jude Bellingham, I think his Manchester United dream will eventually be fulfilled, and he'll be a striker for Erik ten Hag in the next season, and eventually before the game against Wolves, he'll be a Manchester United player. He's saying that भाई आपको जूड बेलिंगम का कैसा परफॉर्मेंस लगा? Eventually, it was really good in my opinion. He is a baller. Just wait a minute. He I think he is a baller, bro. He's operating really well with Rodrigo and Vinicius, in my opinion, in that false nine role, which eventually uh, opens up for everything for him. He's got that freedom. Eventually, I think every player, every attacker in Real Madrid, this formation 4-1-2-1-2 formation, every player has got that freedom. Eventually, Rodrigo is playing down the center. Vinicius has got all of the freedom. Jude Bellingham has got that freedom. He can make those behind the defenses runs. Eventually, that was a brilliant goal from him as well. A brilliant ball from Rudiger. Eventually, a line breaking. Eventually, you can say a long ball. Eventually, that was really good, and surpassing that United backline as well. So that was a really good performance. A solid
8.5, 9 out of a 10 performance for me in my opinion. Arda Güler कब करेगा डेब्यू? कैन वी सी हिम मेकिंग हिज डेब्यू अगेंस्ट बार्सिलोना? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रियल मैड्रिड डोंट वांट टू रिस्क हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक ये अभी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या वो बार्सिलोना के साथ डेब्यू करेगा. Eventually, few days earlier, before 3 to 4 days before the United game as well, there was reports as well that he can be making his debut against Manchester United as well. So मुझे नहीं लगता कि वो करेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर रियली कॉन्शियस विद हिज इंजरी. वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जरूर कर रहा है इवेंचुअली, लेकिन वो रियल मैड्रिड अभी चाह रही है कि सीजन से पहले हम कोई इंजरी प्रोन प्लेयर्स के साथ हम ना करें. तो आई थिंक अगर वो नहीं भी खेलता ना, तो मैं तो भले कोई वो नहीं है, इतनी दिक्कत की बात नहीं है. आई थिंक जुवेंटस के साथ भी मैच है रियल मैड्रिड का. मुझे वो दिन भी देखना तो यार, किस दिन है रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस. रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस is a match, I think, yeah, on 3rd August as well. I think that game might be the one which in might he might feature as well. He might make his debut in the game against Juventus. I think so, yes. In my opinion, there are 6-7 days, and eventually he'll come and eventually make a debut against Juventus. I think he might even come in the second half, depending on his fitness and the program, the rehabilitation he has done. एंड अनदर कमेंट ऑफ हिम, मैंने मैड्रिड एक्स्ट्रा में पढ़ा है कि मॉड्रिच ने कमिटमेंट दिया अगर अर्दा गुलर को वो अपना नंबर 10 देगा जब मॉड्रिच चला जाएगा रियल मैड्रिड से. आई थिंक या सबने पढ़ा है, ये तो मैंने ही पढ़ा है, काफी टाइम पहले की रिपोर्ट है, तो आई गेस 15-20 डेज जब वो साइन करा था, जब की बात है ये. आई थिंक it makes sense for me as well, and it doesn't make sense because अगर आर्दा गुलर की वो परफॉर्मेंसेस इस सीजन नहीं आई, तो आई थिंक नंबर 10 देना कोई इट वुड नॉट बी सूटेबल, और मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड को देना चाहिए फिर नंबर 10 आर्दा गुलर को, क्योंकि इवेंचुअली आप देखो ना यार कि एक बंदा जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जब अपना हैजार्ड को देखा, हैजार्ड को आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी दे दी, तो इवेंचुअली हैजार्ड के ऊपर आपको पता है हैजार्ड ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी थी इवेंचुअली. तो अब विनिशियस आया, विनिशियस की भी वो परफॉर्मेंस अभी तक निकल के नहीं आई, क्योंकि सीजन तभी शुरू नहीं हुआ है. इवेंचुअली इस सीजन भी देखेंगे हम विनिशियस की नंबर 7 के साथ क्या होती है इवेंचुअली परफॉर्मेंस. तो आई थिंक ये अभी कहना बहुत पहले है, क्योंकि मॉड्रिच अभी पता नहीं है लीव कैसे करेगा इवेंचुअली. हाँ, ये तो पता है कि अगले सीजन तो ये सीजन तो मॉड्रिच का आखिरी ही है, एंड आई डोंट थिंक सो कि यार मॉड्रिच का इसमें कोई से होगा. इवेंचुअली द मैनेजमेंट और कार्लो एंचेलोटी प्रॉब्ली, और आई थिंक कोई नया मैनेजर कोई आया इवेंचुअली. आई थिंक अगर उसके प्लान्स में वो नहीं हुआ और कुछ बेंच पे एज अ स्टार्टर नहीं ऑपरेट किया, तो आई थिंक नंबर 10 देना उसको कोई आई थिंक सही नहीं लगेगा इन माय ओपिनियन. आई थिंक, लेकिन मैं तो देखना चाहूंगा. लेकिन इन माय ओपिनियन आप भी ये मुझे बताओ कि रोड्रिगो ज्यादा डिजर्व करता है आर्दा गुलर, बिकॉज Rodrigo, in my opinion, has been that guy. He's wearing for, I think, for Brazil as well in the absence of Neymar. तो I think मुझे तो ऐसा फील आता है कि नंबर 11 चलो जर्सी आपने दे दी है, लेकिन इफ दैट मीन्स इन माय ओपिनियन अगर आपको देनी है तो उसको आप दे सकते हो, लेकिन रॉड्रिगो भी इसके लिए इन माय ओपिनियन कंटेंशन में जरूर आता है इवेंचुअली. तो कैसेमीरो बहुत गंदा खेला भाई अगेंस्ट अस. मैं तो खुश हूँ एज अ रियल मैड्रिड फैन, और क्रूस मॉड्रिच कैसेमीरो और एंचेलोटी का मीटअप भी हो गया. या इवेंचुअली दैट वाज अ होलसम मोमेंट इन माय ओपिनियन, the best moment in the match, in whole of the match in my opinion. So I think that was a really good moment. और कैसेमीरो बहुत गंदा खेला, या आई थिंक यार गंदा इन अ सेंस वैसा नहीं खेला इवेंचुअली. आप देखो अगर उसके शॉट्स, अगर आप देखो कि उसके शॉट्स अजीब से गए बिल्कुल, एंड इवेंचुअली ऑपरेट भी थोड़ा सा सही से नहीं कर पा रहा था इवेंचुअली. देखो आपको ये चीज एक्सेप्ट भी इस चीज को करना पड़ेगा कि कैसेमीरो नीड समथिंग, जो समवन बिसाइड्स हिम जो कि होल्ड अप प्ले अच्छे से कर सके. एंड इवेंचुअली एरिक्सन टुडे वाज नॉट गुड इन माय ओपिनियन. एरिक्सन वाज पिस पुअर, ही वाज रियली पुअर देन कैसेमीरो एज वेल इन माय ओपिनियन. कैसेमीरो से भी ज्यादा वो पुअर था इवेंचुअली. जब आप कैसेमीरो एक ऐसा प्लेयर है कि वो आपको डर्टी बॉल्स करके देगा, आपको एवरीथिंग करके देगा, आपको पासिंग लाइंस बना के देगा, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा कि बॉल होल्ड अप आपको करके देगा. इवेंचुअली आपको उसके बराबर में कोई ऐसा ऑपरेटर चाहिए, बॉल ऑपरेटर, जो कि रियल मैड्रिड वी ऑल नो क्रूस डीप लाइन प्ले मेकर के रोल में रखते थे विद कैसेमीरो, और मॉड्रिच आगे जाते थे. इवेंचुअली आज मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई ऐसा सेटअप था नहीं. ब्रूनो वाज इवेंचुअली नॉट प्लेइंग एज अ नंबर 10, नंबर 8, प्रॉपर नंबर 8 इवेंचुअली. तो उसकी कोई गेम ए करके निकल, उसकी ए गेम नहीं आई थी इवेंचुअली. एंड मेसन माउंट इन दैट पोजीशन वाज अजीब सा, मुझे भी नहीं समझ में आया मेसन माउंट ने आज पूरे गेम में क्या किया. एंड क्रिस्टियन एरिक्सन अलोंगसाइड कैसेमीरो आई थिंक डिडंट मेक सेंस फॉर मी.
द मिडफील्ड ऑफ मेसन माउंट, कैसेमीरो और क्रिस्टियन एरिक्सन अच्छी नहीं थी, और इवेंचुअली कैसेमीरो का जब भी गेम भी गंदा निकल के आया, इवेंचुअली आई थिंक कैसेमीरो अच्छा गेम निकाल के आपको देगा। वैसा नहीं है कि यार हर प्लेयर आपको, आई एम टेलिंग दिस टू यूनाइटेड फैंस एज वेल, इन डायरेक्टली टू द यूनाइटेड फैंस एज वेल। मैं बैंग बैंग बाई शॉट्स के इनके कमेंट को एड्रेस करके यही आपको बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप अगर कैसेमीरो ना के पिछले सीजन आपका बेस्ट प्लेयर रहा है वो इवेंचुअली, तो आपको रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। आपने उसकी फैट होने पे आपने उसका मजाक बना दिया, आपने इवेंचुअली उसके साथ बिल्कुल ही वो कर दिया कि यार ही इज फैट, और उसको आपने वीडियोस ऐसी बना दी। इवेंचुअली यूनाइटेड फैन बॉयज ही कर रहे थे हरकतें, कोई बाहर के फैन बॉयज आके नहीं कर रहे थे, लिवरपूल आर्सेनल के। फिर उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बैंटर शुरू किया इवेंचुअली। तो आई थिंक यूनाइटेड नीड टू कंट्रोल देमसेल्व्स, यूनाइटेड फैन बॉयज नीड टू कंट्रोल देमसेल्व्स, और फैन बेस को ये चीज खुद सोचनी चाहिए कि हमें अपने बेस्ट प्लेयर को इस तरह रिडिकुलसली हमें उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, इन माय ओपिनियन। और अगर एम्बापे नेक्स्ट सीजन आता है तो क्या उसको नंबर 10 मिलेगा? रॉड्रिगो को नंबर 11 ही ठीक है, अगर गैरेथ बेल का नंबर 11 जर्सी की, आई थिंक यार रॉड्रिगो नंबर 11 की जर्सी की लेगेसी बढ़ाएगा इवेंचुअली, इन माय ओपिनियन। लेकिन यार आई थिंक एम्बापे नेक्स्ट सीजन नहीं आता, एम्बापे इसी सीजन आ रहा है इन माय ओपिनियन। लेकिन हाँ, हु नोज के नेक्स्ट सीजन भी आ जाए, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी कंक्लूसिव रिपोर्ट्स नहीं है। मैं अभी बात करूंगा एम्बापे की भी इन जब आगे बढ़ेगा लाइव सेशन। तो आई थिंक मुझे जो लगता है कि एम्बापे इस सीजन ही आ रहा है, एंड इवेंचुअली नंबर 10 की जर्सी, अगर आपकी कमेंट को एड्रेस करूं तो नंबर 10 की जर्सी इन माय ओपिनियन इस सीजन आएगा, तो इस सीजन तो ऑब्वियसली नंबर 9 ही जर्सी अवेलेबल है, और आई थिंक वो ही मिलेगी इसको। और इन माय ओपिनियन नंबर 9 ही जर्सी वो कंटिन्यू करेगा। नंबर 7 इज फॉर विनिशियस, नंबर 9 विल बी फॉर बेंजेमा, सॉरी बेंजेमा क्या यार, बेंजेमा की याद आ रही है, सॉरी किलियन एम्बापे, एंड इवेंचुअली नंबर 11 for Rodrigo in my opinion, and that would eventually settle things once for all अगर एम्बापे इस सीजन आता है, and eventually if he comes next season then it would be a debate, it would be a certainly a very much a very high debate as well कि क्या बनता है सिनेरियो कि एम्बापे को नंबर 10 जाता है, क्योंकि एम्बापे at this point of time wears the number 10 jersey for France national team as well, and he's the captain obviously, so I think sense तो बनाता है नंबर 10 jersey eventually एम्बापे के लिए। अरे लिसांड्रो ने बहुत गंदा टैकल मारने की ट्राई की थी जूड बेलिंगम, यार ये अच्छा नहीं लगता लिसांड्रो का, मुझे बहुत अग्रेसिव हो जाता है। आई थिंक यार देखो एवरी प्लेयर इन दैट टीम इज अग्रेसिव। देखो मैं एज अ मैड्रिडिस्टा होने के नाते भी और एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होने के नाते भी मैं ये बात आपको इवेंचुअली मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। आई थिंक मैं ये इंग्लिश में बोलूंगा ताकि पूरी फैन बेस को ही पता लग जाए। सो लेट्स let's imagine one thing that Lisandro Martinez, we all know he is very much aggressive, and let's imagine if it would have been Cruz or if it would have been Ramos or Pepe doing the same things. We all know that overhead kicks from that Pepe and Ramos when they were like this, and Frank Ribery was like this in the Bayern versus Real Madrid game. So I think they used to do the dirty things ना, तो eventually आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा जब सामने टीम से कोई अग्रेसिवली आपके पास ऊपर चढ़ के आए। तो आई थिंक दैट डिफेंडर्स, ऐसे अग्रेसिव डिफेंडर्स इन योर टीम होने चाहिए इवेंचुअली। हाँ चलो मैं मानता हूँ कि यार ये टैकल इट वाज a very fierce tackle in my opinion, it would have led to severe injury as well in my opinion, लेकिन नहीं हुई। एंड इवेंचुअली आई थिंक अग्रेसिव माइंडेड प्लेयर्स हर टीम में होने चाहिए ऐसे। एंड रियल मैड्रिड को ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, रियल मैड्रिड फैन बेस को, कि इवेंचुअली रियल मैड्रिड के पास जो थे ना सबसे खतरनाक प्लेयर्स थे, कैसेमीरो, आपके रामोस, एंड इवेंचुअली आपके एक और कौन है ये पेपे, तो ये आपके पास बहुत खतरनाक आपके प्लेयर्स थे इवेंचुअली। तो दे नीड टू नाउ आई थिंक सर्वाइव एज वेल, बिकॉज आपका वक्त गुजर गया, उस टाइम पे आपका समय गुजर गया इवेंचुअली। तो अब आपको ये चीज बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी अगर सामने से कोई आपको साथ अग्रेसिव, आपको आपके भी सेंटर बैक जैसे थे, तो इवेंचुअली आपको भी सर्वाइव करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। तो आई थिंक ये, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज की अगर मैं बात करूँ तो टैकल तो अच्छा काफी गंदा था इन माय ओपिनियन, बहुत ज्यादा ही, और इवेंचुअली ट्राई काफी ज्यादा ओवर ट्राई कर लेता है आई थिंक इन माय ओपिनियन, काफी ज्यादा थोड़ा सा ओवर ट्राई करने के चक्कर में ही बिकम्स मच मोर, थोड़ा सा कहते हैं कि यार लीडरशिप इवेंचुअली वो खो बैठता है, और थोड़ा सा अपना माइंड भी खो बैठता है, जिसकी वजह से वो येलो कार्ड्स भी ले सकता है, और इवेंचुअली ये आगे लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा नुकसान भी कर सकता है उसका। आई अप्रिशिएट लिसांड्रो मार्टिनेज, एक बार टैकल करने की नीड नहीं थी। हाँ इवेंचुअली ये तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, आई विल रियली एग्री विद इट इवेंचुअली, बिकॉज I think in that situation it would the ball was not with him, and eventually he just tackled the player Jude Bellingham,
and eventually he did not tackle the ball. He did not try to win the ball eventually. So I think that makes sense to me as well. In my opinion, red card lega bhai Lisandro. uh, yes, like Ramos. I think yeah, क्योंकि देखो ऐसे आपको अग्रेसिव प्लेयर्स एवरी टीम नीड्स दीज अग्रेसिव प्लेयर्स इन माय ओपिनियन, जो कि और अच्छा प्लेयर है यार, इवेंचुअली उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. द वे यूनाइटेड के अंदर अब जो बैड बॉयज आ रहे हैं, बैड बॉय बिहेवियर वापसी यूनाइटेड के अंदर आ रहा है आफ्टर द एरा ऑफ 2009-10, जो जब आपके टेवेज और ये सारे होते थे बैड बॉयज बन के जो घूमते थे. तो इवेंचुअली उसके बाद अब यूनाइटेड का एरा वापसी आ रहा है इस चीज का. ब्रूनो, Casemiro, and Lisandro Martinez as well. These are the bad boys in my opinion, and Anthony as well. They fight really much together, all together in the games as well. So I think, in my opinion, uh, this रेड कार्ड तो लेगा यार. आई थिंक यस, आई विल डेफिनेटली एग्री. तो हम लोग अब अपनी न्यूज के ऊपर ही आते हैं. अपना जो हम ट्रांसफर रूमर्स के ऊपर बात कर रहे थे, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो eventually. तो United are confident in Ten Hag's ability to improve Rasmus Højlund and hone him for the PL, with the player only scoring 9 goals last campaign. Yeah, we all know this fact that he has scored only 9 goals in the last season for Atlanta, but he has been a very good player in the final third. I think he has got the most touches or probably stuff like that. He's been most of the times in Atlanta, in Syria, he has been in the final third in my opinion. So I think there are several records to his name, but eventually the goal scoring form would come out as well, because Eric Ten Hag has made several players very much. I think he has improved several players in my opinion. He's improved Luke Shaw as well. He has improved Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Marcus Rashford as well. I think Anthony he'll improve as well. Sancho is improving a bit as well in my opinion. So I think Eric Ten Hag do believe in Eric Ten Hag. United fan base should believe in Eric Ten Hag, because he'll eventually turn him into a lethal goal scorer, and eventually United hierarchy, United management also think that Eric Ten Hag has got that ability. Eric Ten Hag's management has got that ability to turn him into a very good player eventually, and he can be. And there's a report as well that regarding Marcus Rashford and Rasmus Højlund, that Marcus Rashford eventually might be the one who might play in the center in some of the games as a number 9 eventually, and Rasmus Højlund might play as a on the left wing eventually. I think to try to eventually gain some more momentum in the and eventually get some improvement in the Rasmus Højlund to help him adapt into the United system and eventually the Premier League system eventually. अरे जब से कैसेमीरो यूनाइटेड में गया है, मुझे बैड बॉयज की वाइब नहीं आती. हमारे मैड्रिड वाला कैसेमीरो तो गावी और रोड्रिगो दे पॉल जैसे बच्चों को चुप करवा देता था. या इवेंचुअली रियल मैड्रिड, आई थिंक वो बैड बॉयज वाइब्स अब नहीं है. हाँ, यू कैन गारंटी दिस फैक्ट. बट आई थिंक you we have got that one bad boy, bro. Rudiger, Antonio Rudiger. Do you not eventually count him? I think he's the biggest bad boy of all. He can really destroy everyone. And him, Vinicius Junior is also, I think, no, Vinicius is not kind of a bad boy. Eventually, I think Mbappe, Cruz, Mbappe, and Bellingham might be those who can be those bad boys. In even if Mbappe comes, I don't know why I'm talking about Mbappe like that, because he's not a Real Madrid player at this point. I can talk about Bellingham, yeah, eventually. I think he can be that guy. I think Fede Valverde can be also that guy who can turn into a bad boy. बट आई थिंक यार बैड बॉय बनने की जरूरत नहीं है इस टाइम पर इवेंचुअली, क्योंकि आपको पता है कार्ड्स बाहर आते हुए देर नहीं लगती है इवेंचुअली. और फिर फीडे वालवर्डे ज्यादा अग्रेसिव नहीं करेगा तो मुक्के मार देगा, और इवेंचुअली उसका फिर आपको पता है उसका कोर्ट में केस आ जाएगा. बट इवेंचुअली दिस केस इज evicted and he's been given complete freedom in that case as well, because there was nothing charges proved against him, and Alex Baena was not eventually was not convincingly proving which the claims he made against Fede Valverde. So eventually, let's coming back to another report. Rudiger भी पागल है. रूडिगर भी पागल है, वो भी रेड कार्ड ले सकता है. रूडिगर से पीके की वाइब आती है, आई थिंक. या बट आई थिंक Rudiger is that guy who loves to play for the badge eventually. He loves Real Madrid in my opinion. And a free transfer Real Madrid made eventually, that is really good for a classical defender like Rudiger. The way he stopped Erling Haaland in that Champions League semi-final as well in the first leg. So
there's one more report again of United. Then we'll be coming to other clubs as well. Uh, United, David Ornstein on Amrabat. David Ornstein today has given an interview, in my opinion, to 5 UK, in which he has given several reports. He's talked about so many clubs and so many reports that it's one thing. It's one that United are looking at on Amrabat. He's speaking on Amrabat that he is the one who United are looking at. I don't think so. The move has to degree. Some reports suggest has moved to that degree. The way I'll explain you as well. I'm not aware that a deal is nearly done or agreed. It is one that could be acted upon if there are departures. Eventually, you understand this as well. That United are actively seeking. He has been in that list as well, but United have not made concrete attempts to sign him. And the reports which suggest that United have made a 25-30 million bid for Amrabat are contradicting, are not true eventually. And David Ornstein himself has confessed this, that they are not true. And eventually, United are keeping their tabs open in case Fred leaves, in case McTominay leaves, and eventually Fred has been linked to Galatasaray and Galatasaray as well. He has been linked to, in my opinion, another club. I think I've forgotten the name. Fulham, in my opinion. Fulham. Probably Fulham. Yeah, Fulham. And eventually Scott McTominay is linked to West Ham as well. And another comment as well. फीडे वालवर्डे भी हमारा अच्छा बैड बॉय है, वो तो फुटबॉल के साथ साथ रेसलिंग खेलता है. Yeah, eventually I agree as well. Amrabat is good CDM, but I think United should sign a CDM who can learn from Casemiro. Yeah, I think the age doesn't suits Sofian Amrabat, but I think he can give us 5 seasons eventually. 28 years old, and eventually he can give 5 seasons probably. Let's find out his age as well. Sofian Amrabat age. Sofian Amrabat age, he is, I think, I think he's 26 years old, bro. He's 26 years old. What he can play? I think 6 to 7 years. I thought he's 28, but he's 26. Yeah, he can give 6 to 7 years probably to United in my opinion. 6 years at least he can give till 32. So I think that is good. That is amazing for like 2029, 2028. He can give those seasons. I think Kasim, he can play. I think he's not that kind of a defensive midfielder. He is a box to box kind of a player who can eventually work really well in a Ten Hag system. Eventually, I think, in my opinion, and I think let's find out his transfer profile as well. He is a player who operates in the he can play in the defensive midfield and the central midfield role, but I think he can operate in the double pivot with Casemiro as well, and with Bruno in front of them. So I think that would be amazing. That would be a really balling midfield for United. And eventually Amrabat, I think he is really good for United in my opinion. He can be that guy. A 25-30 million deal eventually would be very satisfactory for a 26-year-old. Eventually, I think uh, it is amazing. Yeah, Amrabat वो टकला मुझे तो 30 साल का लगता था. Eventually, yeah, I also thought that he's 28, but he's really 26 in my, I think, according to everything I've searched as well, that he's 26. So I think that suits the bill for United, and eventually United going for him would, I think, now it makes sense as well because he can hold the ball well. He will be a box to box midfielder, and I think that will be a very good signing if United can carry this out. And I think Fred should be sold as soon as possible. McTominay, if he wants to go, he should go as well, in my opinion. And then United should really act quickly upon Rasmus Højlund deal, and then agree the personal terms and stuff like that, and talk with the Fiorentina for the transfer of Sofian Amrabat. In my opinion, I think United should really act quickly as soon as possible because there are several other clubs who are keeping their tabs open as well. Fiorentina's preseason tour, he's not there in the Fiorentina's preseason tour, Sofian Amrabat. So I think he knows that his future is not in Fiorentina, and United should pounce on the opportunity right now because I think he might slip out of the hand as well if any top European club comes around to him and offers him much more salary and stuff like that. And then United, I think so, United will be left in vain eventually. अभी समझ आया कि बार्सिलोना क्यों इंटरेस्टेड है. Yeah, that is why his age is, I think, good as well. I think, in my opinion, nowadays we are eventually looking for
those players who are young, 22, 23. Eventually, 26 is not that kind of an age. Eventually, you guys should have one thing that there are 4 years until he turns 30. Eventually, a 30 age is eventually the mark. We all know that the players turn out to be a bit dull in their 30s as well. And I think 4 years are there. He will operate till 2028, 2027, in my opinion. The 4 years, if he operates over there. So I think that would be amazing. Eventually, Barcelona are also looking, but Barcelona are not signing him because I think, sorry to say, but Barcelona don't have the money to sign him eventually at this point of time. They're looking for other options as well. Gundogan they've brought in, so I think they and Oriol Romeo for 4.5 million. That is a good signing in my opinion. Coming to our other reports, there's still nothing concrete. Fabrizio has himself reported as well, despite the numerous rumors, still no offer to Fiorentina, and his side has spoken with United and he's on the list, but United need to sell players. The current priority is a goal scorer. And we all know the fact that United are at this point of time, that goal scorer is more important than I think. Really, it is a fact that United need to sign Rasmus Højlund before catching on to that Amrabat deal, in my opinion, because United already have signed a midfielder and Casemiro, Eriksen, Bruno, Mount, Fred, McTominay. If they don't leave, eventually there will be a much more squad depth in the midfield eventually. So I think they should sell players and then go for Fiorentina. First, they should need to agree personal terms and eventually go fast on that selling players as well. Go to Galatasaray, make a deal of 20-30 million for Fred as well. If McTominay leaves, make a deal for him as well with West Ham. So I think then United should act quickly in the market because there are not many days left in the season to start as well. Yeah, I know there are 17 days. Eventually, 14 August the season will be starting, 13 to 14 August. But I think you really need to accept this fact that United need to sign a goal scorer before Amrabat signing. Marco Verratti, Saudi Al Hilal chala gaya hai. By imagine Verratti with Ruben Neves and Sergio Milinkovic-Savic. I think uh, I I really feel sad for Ronaldo in my opinion. Just sports मैं आऊँ क्या लिंक दोगे? भाई आप ना बता सकते हो who I don't really know you यार. एक मिनट मैं आपको सर्च कर लेता हूँ. Just sports. Eventually I think just sports. अच्छा गुरशन भाई. ओ हो गुरशन भाई. ओके आई सेंड यू द लिंक. आ जाओ भाई, आ जाओ. मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ इंस्टाग्राम पे. मैं आपको भेज रहा हूँ फुट इट. आपको पता है ना मेरा लिंक है. इवेंचुअली तो मैं आपको भेजता हूँ. 1 मिनट. So I think eventually, in my opinion, let's discuss what we were discussing about. Yeah, about him as well. So wait a minute. StreamYard, I need to open it. Marco Verratti, I think he will be a really good signing for them eventually, in my opinion. And I think if PSG can get a 50 to 60 million out of him, eventually would be really good for them because he's a 30-year-old in my opinion. And आज इधर ही हूँ. अच्छा चलो ठीक है, आप कल आ जाना, मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार. और आप भी बात करो, कुछ भी आपको यार वो करना, अपन डिस्कशन कर सकते हैं इवेंचुअली. सो मार्को विराटी का तो अपन ने बात कर ली इवेंचुअली. और अब आपका दूसरा कमेंट क्या था? बैंग बैंग भाई, मजा आ जाएगा देखने में. अमराबाद भी टकला है, टेन हैग भी टकला. इवेंचुअली आई थिंक सो कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा. गड़बड़ है भाई दया, कुछ तो गड़बड़ है. तो आई थिंक इवेंचुअली अब अगर हम बात करें कुडुस की, and he is not training with the Ajax due to the injury. But 3 days ago, Chelsea had some calls on the player side. Uh, he wanted to come, but eventually he thought that कि कल आ जाऊंगा तो मसला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार. I think he's my friend as well. So Kudus is not training with Ajax, and call on the player side with Ajax to understand the conditions of the deal. Brighton can only get Kudus if they sell some प्लेयर्स. ओके भाई, ओके गुलशन भाई. अरे पीसी डेड हो गया, फोन पे हूँ. ओके भाई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So with Ajax to understand the conditions of the deal, Brighton can only get Kudus if they sell some players. Caicedo deal is still on with the Chelsea. So I think that is the main reason Brighton are not looking to sign Kudus eventually. I think
And this is a transfer double in my opinion, that if Caicedo moves to Chelsea, then the move to Kudus and Chelsea, Kudus and Brighton might happen eventually. I think Brighton will not leave the opportunity in this regard of Mohamed Kudus eventually, because they want to sign a player, a replacement for who's that? Yeah, Moises Caicedo. Eventually, who is going to Chelsea. But according to a report which Fabrizio himself reported as well right now, I haven't included in this slide, that the PSG have reportedly sent a bid of 80 million pounds to the who is that? Yeah, Brighton eventually, and that bid is again rejected by Brighton, who want 105 million for him. नेमार के कुछ रूमर्स लिंक आ रहे हैं क्या? पहले आ रहे थे यार, पहले आ रहे थे eventually, अब नहीं आ रहे इतने, क्योंकि Neymar has agreed to stay in PSG. He will be that I think the lone superstar in that team eventually, because Mbappé, we all know कि उसका तो RR चल ही रहा है. मैं RR को स्पेसिफाई करके नहीं बोलना चाह रहा, आप समझ गए होगे. तो I think eventually, in my opinion, Neymar stays at PSG this summer, and PSG will not be willing to sell him in my opinion. लेकिन यार Neymar, I think अब नेमार का टाइम है इन माय ओपिनियन. अब नेमार का टाइम है कि यार वो कुछ करे, वो कुछ करके दिखाए पीएसजी में. अपने वो जो पिछले 6 साल खोए हैं, इवेंचुअली उसके लिए वो कुछ करके दिखाए. वो मेसी रोनाल्डो भी अब नहीं है यूरोप में, तो आई थिंक वो अपना दिखा सकता है कि यार मैं थर्ड बेस्ट प्लेयर था इनकी जनरेशन का. तो पीएसजी में रह के वो दिखा सकता है. लेकिन इन माय ओपिनियन पीएसजी में रह के यार क्या ही कर लेगा वो. तुम ही बताओ खुद कि यार पीएसजी में अगर वो रहेगा तो इवेंचुअली उसको मार्को असेंसियो और इन सब प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ा. पहले वो एम्बापे, मेसी के साथ खेलता था. इवेंचुअली सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर खुद आ गई है, और उसके ऊपर आएगी तो इवेंचुअली वी ऑल नो द फैक्ट कि उसके पार्टी शुरू हो जाएंगे, उसकी इंजरीज शुरू हो जाएंगी, उसको अपनी बहन की बर्थडेज में जाना पड़ेगा. तो आई थिंक नेमार शुड बी द वन कि वो डिसिप्लिनरी अपने रेगुलेशंस काफी ज्यादा रख ले इन माय ओपिनियन, और सही कर लेगा ना अपने आप को, तो इवेंचुअली ही कैन बी दैट गाय हु कैन लीड पीएसजी इन द लॉन्ग रन इन माय ओपिनियन नेक्स्ट 2 to 3 years. और वो आई थिंक लीडर भी बना सकती है पीएसजी उसको, अगर अगर पीएसजी हैव अ चांस, पीएसजी थिंक कि वो आ सकता है. और आई वांट हिम इन पीएल दिस सीजन. आई थिंक पीएल तो नहीं आता वो, और इस सीजन तो कहीं पे भी नहीं जा रहा वो. ब्राइटन को कोलवेल भी तो चाहिए, चेल्सी का प्लेयर, तभी ब्राइटन काइसेडो को देगा. आई थिंक Colville तो नहीं जाता. Colville is in the plans of Pochettino, and eventually his performance in the under 21 team as well. So under 21 England team जो कि अभी जीती है, I guess Euros जीती है ना under 21 का. So I think that is amazing. He is an amazing guy. He's an amazing center back in my opinion. और मैंने खुद उसको देखा है ना, तो eventually I can guarantee that Pochettino does not want to sell him, and Brighton, despite the interest, know that Chelsea will not be selling that guy Levy Colville to him to Brighton. And eventually, I think Caicedo's transfer is not linked with the transfer of Levy Colville. Caicedo is a whole lot different scenario. Caicedo has agreed his personal terms. He has given the green light to Chelsea as well. But I think at this point of time, Chelsea need him the most. Then Brighton need to sell him, because Brighton know they can do anything with Moises Caicedo, and eventually Moises Caicedo, they have that cushion of Europa League as well with them. And eventually Moises Caicedo knows that if he goes to Chelsea, he will not be playing in Europe next season, and eventually it will only be the domestic cups, and eventually the Premier League which he will play. And if he stays in Brighton, he might have the chance to play in the Europa League as well. So I think it's a win-win situation for Caicedo as well. But I think in the end, Chelsea will eventually sign him, and I think Kudus is not coming to Chelsea in my opinion. Acha. Gulshan bhai saying, for me, Mbappé is MLS in MLS and La Liga over Saudi. I think MLS Saudi में ज्यादा हाइप है. Saudis की ज्यादा हाइप है यार eventually in my opinion. MLS वो हाइप नहीं देगा एम्बापे को. I think yeah, we all know, तो टीयर तो वो किसी भी लीग को अपार्ट कर ही देगा. He'll tear any league apart. सऊदी भी कर सकता है वो, MLS भी कर सकता है, ला लीगा को भी कर सकता है eventually with the likes of Rodrigo, Vinny Junior, Bellingham. We all know the fact कि वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पर. So I think Mbappé in this season I think नहीं जा रहा वो कहीं पे भी. और you all know this fact कि वो रियल मैड्रिड ही आना चाहता है, एंड मैं भी बात ही कर रहा हूँ उसकी, तो मैं अभी इसकी ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट रिपोर्ट्स ही उसी की आने वाली हैं. पीएसजी मिडफील्डर भी साइन करेगी क्या अब? आई थिंक यस, पीएसजी लिंक तो थी काफी सारे मिडफील्डर से,
आई थिंक सोफियान अमराबाद की भी डील में पीएसजी वर लिंक, एंड इन माय ओपिनियन पीएसजी काफी सारे सेंट्रल मिडफील्डर्स हैं जिनके साथ लिंक्ड है। मैं काफी सारों के नाम, एक का तो मैं नाम जानता था अभी, कोई कोई अंडर द रडार काफी प्लेयर था इवेंचुअली, तो आई थिंक ये कोडोस के साथ भी लिंक हो सकती है भाई, पीएसजी के लिंक्स आ रहे हैं, और इवेंचुअली सोफिया अमराबाद के साथ तो मैंने लिंक पढ़ा ही था एक जगह पर, तो आई थिंक पीएसजी तो साइन करेगी, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्को वेराटीज डिपार्चर। अगर पीएसजी से वो जाता है फॉर आई थिंक 60-70 million probably, like Al Hilal can give 60-65 million euros. So I think that would be a really good deal, and PSG can then spend this amount on any other player they think eventually they can get it. So I think that is good. आपके साथ कभी लाइव में बात करेंगे कि हाउ पीएसजी किल्ड नेमार टू बिल्ड एम्बापे, या आप बताना, जरूर बताना मुझे, इवेंचुअली मैं जानना भी चाहता हूँ यार, काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ, मैं आपको भी दूंगा, तो इवेंचुअली दैट विल बी अ वेरी गुड डिस्कशन एज वेल। कल करते हैं, बाद में करेंगे, जो भी आप बता देना टाइम जिस हिसाब से आपको सही लगे। डिजर्बी लव्स लेवी कॉलवेल, ही इज इम्प्रेस्ड बाय लेवी कॉलवेल लोन स्पेल एट ब्राइटन। या आई थिंक यार इम्प्रेस तो है ना, क्योंकि he has got that talent, he has got that ability, he has been very good for Brighton last season as well. So I think मुझे मुझे कोई वो नहीं है यार, क्योंकि मेरा तो क्लब नहीं है चेल्सी, इवेंचुअली मैं चेल्सी फैन से ही खुद पूछूंगा ये चीज। श्रे भाई हमारे हैं, उनके उनसे भी मैंने बात की काफी, और इवेंचुअली लेवी कॉलवेल आई थिंक नहीं जाता, चेल्सी से नहीं जाता, क्योंकि उसको मिनट्स भी दिए जा रहे हैं चेल्सी में इस टाइम पर, और आई थिंक हिम एंड थियागो सिल्वास पार्टनरशिप इज वेरी गुड, और गोल्स भी कम खा रही है आई थिंक, और मैचेस भी जीत रही है चेल्सी इन माय ओपिनियन, तो आई थिंक ही स्टेज इन पीएसजी, इन माय ओपिनियन चेल्सी। तो एमएलएस वेसेल से इनिएस्टा को उठा ले, और अर्जेंटीनियन लीग से सुआरेस को, सुआरेस की यार डील का पता नहीं कुछ ऑफ भी आ रहा था इन माय ओपिनियन के यार, ग्रेमियो से डील कुछ नहीं बन पा रही थी इन माय ओपिनियन के, वो रिलीज क्लॉज पे नहीं कर रहे थे एमएलएस वाले, सॉरी एमएलएस वाले क्या, इंटर मायामी वाले। सो आई थिंक अर्जेंटीनियन लीग से इनिएस्टा, हाँ सही है, एमएलएस वीएसएल से इनिएस्टा को आई थिंक बार्सिलोना 2.2 ही बन रही है इन माय ओपिनियन, और आई थिंक दिस इज ओनली वन सीजन इन माय ओपिनियन, दिस इज फॉर ओनली 1 or 2 सीजन प्रॉब्ली, लाइक बिकॉज दे डोंट हैव देयर फ्यूचर्स ना, अब तो बूढ़े हो चुके हैं यार बिल्कुल ही वो, एंड इवेंचुअली आपको ही पता है कि यार इनिएस्टा की वो लेग्स नहीं रहे, या वी ऑल नो बुस्केट्स अभी भी है, मेसी अभी भी है, मेसी अगले 2 साल खेल लेगा आराम से, और इवेंचुअली जॉर्डी एल्बा भी आ सकता है, तो आई थिंक सुआरेस की भी नी का कोई इशू था जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट भी कंसिडर कर रहा था, सो उसके बाद अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं उसके ऊपर इन माय ओपिनियन, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा। आई थिंक ब्राइटन को अब चेल्सी को काइसेडो नहीं देना चाहिए, किसी और क्लब को चीप में सेल कर देना चाहिए अराउंड 85 मिलियन। क्यों यार, ऐसा क्यों कर दे यार, आपको अगर अराउंड 85 मिलियन भी चेल्सी को पे कर ही दिया ना, आज तो 80 मिलियन की ऑफर डाल दी है चेल्सी ने, जो कि रिजेक्ट कर दिया इन द लास्ट 24 आवर्स इन माय ओपिनियन, तो आई थिंक सही है यार, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इन माय ओपिनियन, अगर चेल्सी काइसेडो को ले लेती है, और ब्राइटन को क्यों क्यों नहीं सेल करना चाहिए, ब्राइटन का वो थोड़ी है यार कि तो कोई राइवलरी थोड़ी है चेल्सी से कि यार वो नहीं सेल करेगी इन माय ओपिनियन, तो आई थिंक करना चाहिए। मैं तो कल रात से नहीं सोया, बस आफ्टरनून में 3 आवर सो गया था, दैट्स इट यार, ब्रदर्स वी आर ब्रदर्स ब्रो। मैं सुबह उठा हूँ आई गेस मैच देखने के लिए, और वो मैच देखा मैं, उसके बाद नहीं सोया, वीडियो बनाई, एंड इवेंचुअली दोपहर में मैं जाग रहा था, और फिर मैं अपनी काम काज कर रहा था दूसरे, तो इवेंचुअली उसके बाद मैं सिर्फ दोपहर में 1 या 1.5 घंटा कुछ इस तरह सोया, और फिर मैं अभी वापसी यही लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहा हूँ इवेंचुअली। तो ब्रदर्स ब्रो, Suarez की deal collapsed हो गया, yeah, that was what I was speaking, that Suarez deal I think has collapsed because of the, I think for the release clause or probably like that, but I read the report somewhere, I don't really know about it because I don't want to share false information with any one of you, so I think that is it, that is for that reason। एक ट्रांसफर न्यूज आई है, इसको बेटिस ने साइन कर लिया, या इसको has signed with Real Betis, and इसको I think I'm really happy for him in my opinion, because the way he was treated, yeah, he himself in an interview himself said that the director of sporting director of Sevilla, Monchi, was really rude to him, and eventually he was very loved by the players, by the staff as well, by the coaching staff as well, and by the fans as well. So I think he was eventually not eventually I think Monchi was really bad with him,
and they had a fight as well. And that day he realized that he needs to leave the Sevilla as well. So I think that eventually after the Real Madrid saga, after that he was eventually close to winning that Ballon d'Or. You guys remember it, that in 2018 he was so close to signing for Barcelona as well. He was known as Wonder Kid, and John Laporta did everything to sign. Bartomeu did everything to sign him, but eventually he rejected the offer and said that I will stay at Real Madrid. It is my dream club. And eventually after that Real Madrid saga, after the 2018-19 seasons, and he eventually fell apart. I think he himself said that I really loved Zidane. Zidane eventually was the manager who under whom I really played good. He was the one who expected more from me, and I expected to deliver him as well. And eventually we had a very good relationship with each other as well. So I think, and the other managers he spoke as well, that the other managers were eventually not starting me. I did not know how I fell apart, how I fell on the bench eventually. So I think that is the reason I was really sad for इसको, जो ये स्टोरी पूरी मुझे पता लगी. एंड यूनियन बर्लिन का भी उसका जो ट्रांसफर सागा था वो काफी ज्यादा बुरा हो गया था उसके साथ, क्योंकि यूनियन बर्लिन ने पहले उसको बुलाया, उसको बोला कि आपके मेडिकल टेस्ट जो है हम आपके वो करेंगे, और मेडिकल टेस्ट के बाद उसको बोला गया कि आप यूरोप में नहीं खेलोगे. यूरोप के लिए उसको एक सीजन के लिए साइन किया गया. उसके बाद दूसरी बार में उसको फोन करके बोला गया कि 1 ईयर प्लस 1 साल का आपको जो आपको दिया था हमने कॉन्ट्रैक्ट, वो हम आपको नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे. तो जिसके बाद इसको ने बोला कि मैं नहीं साइन करूंगा. और इवेंचुअली हमें रिपोर्ट्स ये बताई गई थी, वी ऑल नो द रिपोर्ट्स, कि यूनियन बर्लिन का उनका ट्रांसफर इस वजह से फेल हुआ है कि उनका मेडिकल खराब था. लेकिन इवेंचुअली ही स्पोक दैट यूनियन बर्लिन ने खुद यूनियन बर्लिन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपका बेस्ट फिजिकल शेप है, आप एवरीथिंग इज गुड, लेकिन मीडिया ने इंटरप्रेट उसको गलत किया. तो आई थिंक इसको के लिए मैं काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मैं आई थिंक इसको के लिए मैं खुश हूँ इवेंचुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे क्लब का लेजेंड था और मैं बहुत लव करता हूँ उसको इवेंचुअली. आई थिंक if anyone would have won Ballon d'Or after Leo Messi, after Ronaldo and Modric in that Real Madrid team, it would really have been, in my opinion, Isco. सो अर्जेंटीनियन लीग में नहीं है अब भाई. लुइस सुआरेज ब्राजीलियन क्लब ग्रेमियो के लिए खेलता है. लुइस सुआरेज या ग्रेमियो के लिए खेलता है. मैंने स्पेसिफाई किया था लेकिन मैं भूल गया था कि अर्जेंटीनियन लीग में नहीं है वो. हाँ, तो ब्राजीलियन लीग में. ब्राइटन और चेल्सी की राइवलरी होनी चाहिए, मजा आ जाएगा यार. क्यों उनकी लड़ाई करवानी है यार, क्यों फड्डे कराने, फसाद नहीं कराना अपने को सिर्फ देखना है क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों आई थिंक चेल्सी का अभी इस टाइम पर थोड़ा सा ऑफ चल रहा है सीन. अरे मैं तो रात भर प्ले स्टेशन में गेम्स खेलता हूँ भाई. सही है यार, आपके पास प्ले स्टेशन है, बड़े लोग हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. एक कंप्यूटर था, वो हमारा पूरा गेमिंग पीसी बना हुआ था. उसके बाद मैंने सोचा भी था कि रिकॉर्डिंग्स करके डाला करूंगा फीफा की, पेस की, लेकिन इवेंचुअली वो भी चले गया. अब लैपटॉप से काम चलाना पड़ता है. तो गुरशीद भाई सेइंग दैट प्राइम बार्सा और रियल मैड्रिड की अगर 11 बनेगी तो उसमें सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर्स होंगे, इसको, विडाल, रैकिटिच, बेल. आई थिंक या I'll really agree with you in this point, in this your comment as well, because I think it would be a really good one. I think Leo Messi, Ronaldo are always there. I think Cruz should be included in that debate as well. I think Vidal, I don't think so that he fits in that bill in my opinion. But Isco, Isco and Cruz might be as well in there, because he's an underrated player as well for Real Madrid. Because we don't really consider Cruz in that level of Modric, because eventually Modric has won a Ballon d'Or, Cruz has not won. But Cruz is a complete player as well. Luka Modric is a complete player, but Cruz as well is a complete player, because he can operate the ball. He can, the way so many players have identified Cruz as a magician of football. Eventually, so many players I can count you. I think Zidane, or probably who said that the way Barcelona can Barcelona tries to build up the play and score a goal by placing 30 passes. Tony Kroos can do it with only one pass. He can score, he can create goal with only one pass eventually. So I think this is a very big line in my opinion. Barcelona's style of play is of we all know of eventually of tiki taka and style of play, possession style of play, and several passes, and then they score a goal. But eventually, Real Madrid, that is why successful on the counters, because they have players like Luka Modric, Toni Kroos, who can drive the ball upwards without any concerns, without any so easily, so swiftly, so flexibly. They can do it as well. So I think this is why Real Madrid is such a successful team across the
in the last 6 to 7 years when in I think 9 to 10 years, because they are here for 9 to 10 years eventually. So इसको rejected Barcelona, he's a Madridista भाई. हाँ, eventually he's a Madridista. उसने अपनी इस बात में accept भी किया कि I love Real Madrid and that is the club of my dreams, and eventually that is why I rejected Barcelona. तो यार बंदे की लॉयल्टी तो है ना. शॉर्ट्स, हाँ, लॉयल्टी भाई, लॉयल्टी +1 इन माय ओपिनियन. यस. बार्सिलोना अंडररेटेड प्लेयर आर सैमुअल उमटीटी एंड मार्टिन ब्राथवेट. यार गोट डियोंग को भी तो इंक्लूड करो, लूक डी गोट भी है भाई इवेंचुअली. तो मुझे तो यही लगता है. और पीके भी यार, आप 2022 वाला पीके भी इंक्लूड करना उसमें. ही इज दैट गुड एज वेल इन माय ओपिनियन. तो यार आई थिंक बहुत मतलब बेंटर है यार, ये बेंटर है. स्टिल आई रिमेंबर 2013 में 8 साल का होऊंगा. 1 बजे सारे कजन्स मिल के एल क्लासिको देखते थे एक टीवी बाई स्क्रीन के साथ. दोज वर द डेज यार, ग्लोरी डेज ब्रो, ग्लोरी डेज. इवेंचुअली मैं भी ऐसा ही था कुछ, और बहुत बहुत मजे थे यार इन माय ओपिनियन. बहुत ही ज्यादा एक सेटिस्फैक्टरी थिंग्स थी. और मुझे याद है कि एज यू ऑल नो आई एम अ मुस्लिम, तो मैं रमजान की रात में, मुझे याद है मैं देखता था मैच. और 2014 की बात है ये, मैं बता रहा हूँ कि मैं पहली बार मैंने एक शर्ट ली थी एंड दैट वाज ऑफ मैंने यूनाइटेड को तो मैं बहुत बचपन से सपोर्ट करता था इवेंचुअली, लेकिन मैंने पहली बार एक शर्ट ली थी फुटबॉलर की एंड ही वाज ऑफ मेसेट ओजिल. और वो मैंने जब ली थी जब मैं अर्जेंटीना वर्सेस जर्मनी का फाइनल था. माय ब्रदर बॉट अ जर्सी ऑफ लियोनेल मेसी एंड आई बॉट अ जर्सी ऑफ मेसेट ओजिल. तो मुझे काफी ज्यादा मतलब रात थी, और हमारा जो सहरी से पहले का टाइम होता है उस पर बैठ के हमने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था. और इवेंचुअली आई सपोर्टेड जर्मनी इन दैट, बिकॉज उस टाइम पे आपको पता है यार, राइवलरी अलग अलग सिनेरियो पे थी, रोनाल्डो मेसी वाली दिमाग में मेरे. तो आई थिंक यार बहुत ग्लोरी डेज थे यार. एंड आई थिंक फुटबॉल वोंट रिमेन द सेम. जब हमारी जनरेशन आगे बढ़ेंगी, जब आई थिंक फुटबॉल वोंट रिमेन द सेम एट ऑल. और honestly, Ivan Rakitic is a very underrated player. Yeah, I definitely agree, bhai. Definitely agree. At that time, I used to like Real Madrid. I think that was prime Real Madrid, 2012 and 2013 Real Madrid. I don't really remember it, but I know those were the days I started loving football, in my opinion. And I think that was really good. The 32nd champion La Liga for Real Madrid, and that night, I also remember that night when I was, I think, 6 to 7 years old, probably, when Real Madrid lost against Bayern Munich in that Champions League night. That was the night I cried as well. I cried when Ronaldo was on the ground, and eventually he was crying as well. So I also cried in that night as well. So I think मुझे पता है कि मैं भी इस रात में रोया था. भाई मेरे एक फ्रेंड थे, वो जापान में, और ओसाका के अल नसर का पीएसजी वर्सेस अल नसर मैच देखा. रोनाल्डो को भी खेलते हुए देखा. यार ये तो एक अचीवमेंट है भाई, मोमेंट है भाई, मोमेंट. रिकॉर्ड कर लिया जाए इसको यार, मोमेंट है. हमें भी काश मौका मिल जाए रोनाल्डो को खेलते हुए देखने का एक बार जिंदगी में यार, एक बार बस. मैं तो यही करूँगा, पिच इन्वेट कर लूंगा जाके. मैं रोनाल्डो का इतना कट्टर फैन था कि एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्ले एज आरएम इन फीफा. एंड हम 2 कजन्स थे, आरएम वाले 2 बारसा वाले, PS3 पे सारे खेलते थे यार. मुझे याद है मैं फीफा 8 मेरे पास थी. फीफा 8 थी आई गेस, फीफा 8 या फीफा 9 थी जब मैंने 4 साल खेली है ये फीफा 8 फीफा 9 इन माय ओपिनियन. और हाँ, मैंने यही खेली है, 4 साल खेली है. और 2014 से खेलता आ रहा था मैं. 2016-17 तक मैंने खेली थी. उसके बाद फिर मैंने पेस पे आया. मैं पेस 16, 17, 18, 19 इस तरह आता गया. तो मजा आता था यार. हाँ इवेंचुअली ये तो है, ये तो बात है यार, कट्टर रोनाल्डो फैन होने की ये तो बात है. आई थिंक I started watching football in Real Madrid from 2014 when Carlo Ancelotti is there and we won the La Decima. यार वो तो एक हिस्टोरिकल नाइट थी आई थिंक, इन माय ओपिनियन. वो मुझे याद है, वो मुझे भी याद है. आई थिंक वो रमजान नहीं था, आई थिंक नहीं, उससे पहले था क्योंकि चैंपियंस लीग पहले हो गई थी और उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ था छुट्टियों में. तो हाँ मुझे याद है, क्योंकि मैं इतनी जर्सीज वगैरह लेता नहीं था इवेंचुअली, लेकिन फिर मैंने मेसेट ओजिल की सबसे पहली बार ली थी, फिर मैंने रोनाल्डो की ली थी, और फिर जर्सीज का कलेक्शन बनाता गया था मैं. बट वो सब खत्म हो गया था. वापसी में मैंने जर्सीज वगैरह बाय करना शुरू कर दिया. आई यूज्ड टू वॉच फुटबॉल फ्रॉम 2013 to 17. दैट फुटबॉल से दूर रहा काफी टाइम. देन आई स्टार्टेड टू वॉच एटलेटिको मैड्रिड इन 2021 एंड तब से मेरी फेवरेट बन गई वो. आई थिंक 2021 में एटलेटिको मैड्रिड वो जीती थी ना ला लीगा. हाँ, तो आई थिंक
सही है, एवरीबॉडी लव्स, क्योंकि यार एक मोमेंट ऐसा देती है कोई भी टीम जिसकी वजह से आप प्यार करना उस टीम से शुरू कर देते हो। और इवेंचुअली इवन एज अ किड आई यूज्ड टू लव रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे याद है मेरे पास एक हुडी हुआ करती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और रोनाल्डो को मुझे याद है मैं कैसे एक दीवाने की तरह रोनाल्डो को सपोर्ट करता था। खैर हम काफी ज्यादा टॉपिक से हम दूर निकल गए, लेकिन अच्छी डिस्कशन थी, अच्छी डिबेट थी इन माय ओपिनियन. My understanding is that actually Chelsea have 3 bids rejected for Caicedo 60, 65, 70. David Ornstein reported in the afternoon, and then a report came in the night of Fabrizio Romano himself that 80 million bid has also been rejected by Brighton for Moises Caicedo from Chelsea. So I think that is amazing. And let's get back to this turtle. I think this is the most interesting topic. I love to debate on it. I think मुझे बहुत मजा आता है इस टॉपिक में बात करने में. So yes, it is Kylian Mbappé himself. Fabrizio Romano has said in an interview to Unemp. I don't know what is that. लेकिन हम अपनी रिपोर्ट की पहले बात कर लेते हैं. This whole Mbappe saga depends on Real Madrid. They are in control. It's up to them if they want to anticipate the deal now or wait for next summer. तो भाई रियल मैड्रिड के हाथ में पत्ता आ चुका है. The way Fiorentino Perez has led the situation is remarkable. Needs to be applauded as well. I think the other fan base, I think Barcelona, Liverpool, and these kind of fan bases would eventually not really like this fact that Fiorentino Perez is such a great uh, owner. I think even as a United fan, I don't really like. I really like Fiorentino Perez. If I am talking as a United fan, as a Madridista, you all know I love Fiorentino Perez. But eventually, Perez has led the cards. Perez has played the ball game, which he was not able to play in 2021. And eventually, it was Real Madrid in 2021 who went earlier, who stepped one ahead, who made the first step, in my opinion. And eventually that led to Real Madrid being in the downhole or situation like that, and eventually Mbappe really signed with Real Madrid, with PSG. And I think that was a situation in which there was nothing agreed or probably stuff like that. And eventually I think now it's the situation that Real Madrid are very very much in the driving seat, and eventually the gear is with Mbappe. I think, and Nasser Al Khalifi is sitting at the back and he cannot do anything. Eventually, I think so. मुझे नहीं लगता है क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन मैं आप लोग कमेंट्स ले लेता हूँ. अच्छा, कमेंट्स ले लेते हैं पहले. एक मैच था, आई रिमेम्बर 2013 वर्सेस एफए कप फाइनल, आर्सेनल वर्सेस एफए कप, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी एफए कप. इट वाज अ वेरी गुड मैच. 2 बजे अपने भैया के साथ देखा था. Yeah, that these memories of football always last in our hearts, and eventually we will tell to this hour of these things to our next generations as well. And eventually I think the love of football will never ever now get out of our hearts, in my opinion. So I think that is really amazing. I cried when Ronaldo left Real Madrid. I remember Cristiano Ronaldo interview with एक चिचेरेटो टीवी, चिचेरेटो नहीं था, आई गेस वो था, इट वाज चिरिंगुइटो टीवी. दैट इज आई थिंक ऑफ जोसे फेलिक्स डियाज, जिसपे वो बैठा होता है, कवरेज करता है, अभी एम्बापे की टिक टाक करता रहता है. तो टीवी इन 2017 he said I'm in love with Real Madrid, I want to retire at Real Madrid. Yeah, he said I think what he said, what do you love? He was asked a question, what do you love? He said, I love my girlfriend, I love Real Madrid, I love Portugal, and I love my mom and stuff like that, and I love Real Madrid. And that in an interview that really made us cry as well. कि यार मतलब अब अगर देखते हो ना आप, तो आपको वो होता है कि यार रोनाल्डो क्यों लीव करके गया रियल मैड्रिड को. 2 साल रुक जाता, 2021 तक का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करके जाता, इवेंचुअली एक एज अ लेजेंड जाता. Probably Real Madrid would have won four Champions League as well, in my opinion, अगर वो होता. तो मुझे नहीं लगता था कि बेल भी जाता 2018 में, इवेंचुअली जिडान भी जाता, तो इवेंचुअली मुझे लगता था कि चैंपियंस लीग और भी जीत जाती रोनाल्डो, और 2018 का बैलन डोर भी रोनाल्डो का ही था इवेंचुअली, इन माय ओपिनियन. I think we finally have won the Mbappe battle. Yeah, probably you can say that. David Ornstein, the most common consensus is that one way or the other, Kylian Mbappe will be heading to Real Madrid. जो कि 5 UK को दिया. Eventually I told you that he has given an interview जिसपे उसने सब बातें कही हैं. उसने पूरा
ये चीज कंफर्म की है और बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात की उसने, एंड इवेंचुअली इन माय ओपिनियन कंसेंसस यही है कि वन वे और द अदर रियल मैड्रिड विल बी हेडिंग टू रियल मैड्रिड, लेकिन उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो इस सीजन आएगा या नेक्स्ट सीजन आएगा। तो अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो मैंने निकाल के रखी है, फिर हम एम्बापे के टॉपिक के ऊपर आते हैं। आफ्टर फेलिंग टू साइन किलियन एम्बापे, अल हिलाल आर आइंग अ मूव फॉर बार्सिलोना स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोस्की वाया मुंडो डेपोर्टिवो। मुंडो डेपोर्टिवो की रिपोर्ट्स बहुत अनरिलायबल नहीं होती, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिलायबल होती हैं, लेकिन आई थिंक रिलायबल होती जरूर है। तो मुंडो डेपोर्टिवो की रिपोर्ट है, तो देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन माय ओपिनियन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, आई थिंक यू शुड बिलीव इन दिस, और मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आई थिंक लेवेंडोस्की विल नॉट बी लीविंग बार्सिलोना, ही लव्स बार्सिलोना, ही लव्स द सिटी, और एक साल में कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा डिस्पाइट द बैग बार्सिलोना जो अल हिलाल ऑफर करेगी। लेकिन आई थिंक, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या होने लगा है, लेकिन आई थिंक वो लेवेंडोस्की का जो सीन बन रहा है ना, बार्सिलोना आई थिंक कैश इन कर सकती है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बार्सिलोना को अपने फाइनेंसेस बढ़ाना है। या वी ऑल नो कि बार्सिलोना हैव साइंड अ डील विद कतारीज हु विल इन्वेस्ट 100 million in their club, and eventually they'll be able to register the signings as well, the new signings and the players as well. And eventually I think there's a deal with a German billionaire as well, or millionaire, who will be eventually spending something, pouring some finance in Barcelona's finances as well. So I think this will lead to, I think, despite the fact of this, Barcelona needs something, some financial backing, needs some finance to eventually get some players, get eventually. I think if they need to make a statement signing, like Real Madrid has made Bellingham, and if Real Madrid makes a Mbappé signing eventually, so Barcelona, in my opinion, will try to make a marquee signing, and for that reason, I think, or probably if they can add to their squad depth or probably stuff like that. So I think if they want to, they can sell Lewandowski, but I don't think so. They'll be selling Lewandowski at this point of time, in my opinion, because Lewandowski has been the Pichichi top scorer as well. So I think why he'll be leaving Barcelona in one season, I think it doesn't make sense for me, but it makes sense for everyone as well, because I think it might make sense, because Al Hilal might be offering a 50 million deal for Barcelona. They can get 50 million, and I think this will raise their finances as well. I think so, probably stuff like that. I think uh, I don't know what to speak, but what to do, what to know more in this case of Robert Lewandowski. If any Barcelona fan knows, if he's in the comment section, he can address as well. If he's watching us, he can address as well. Let's all agree, CR7 Messi, RM, बारसा मेड फुटबॉल, शायद अगर ये नहीं होते तो मैं फुटबॉल नहीं देखता होता। या इवेंचुअली दे हैव इंस्पायर्ड होल लॉट ऑफ जनरेशन। यार फुटबॉलर्स उनकी वजह से बने हैं ना, आप देखो पेड्री, गावी, मेसी की वजह से बने। जो भी है, मतलब इंस्पिरेशन लिए, बने ही नहीं, इन माय ओपिनियन इंस्पिरेशन लिए काफी सारे फुटबॉल फैंस। हमने देखो, वी हैव स्टार्टेड फुटबॉल, हमने क्लब्स को देखा, हमने अपने फेवरेट प्लेयर्स उसमें पसंद किए, एंड इवेंचुअली वी स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, और इवेंचुअली आई थिंक ये चीज चलती आएगी, हमारी जनरेशन में आगे चलती आएगी कि वो प्लेयर्स को एड्रेस करेंगे। और अब आगे आने वाली जनरेशन जो है, जिन्होंने रोनाल्डो, मेसी को नहीं देखा, देर इवेंचुअली सीइंग किलियन एम्बापे एंड एर्लिंग हालैंड, उनकी वजह से बनेंगी। लेकिन किलियन एम्बापे से आई थिंक इंस्पायर नहीं हो तो बेहतर है यार। लेकिन आई थिंक नहीं यार, बोलना भी नहीं चाहिए, जैसे वो टकला ओल्ड मैन जो टिक टाक करता रहता है। नहीं, अब टकला नहीं, अब उसके बाल आ गए सर पे, उसके बाल आ चुके हैं, ट्रांसप्लांट करा लिया लॉन्डे। Who will be the next Barcelona striker if Lewandowski move to Saudi? यार विटोर रॉक है, ऑब्वियसली विटोर रॉक को क्यों लेके आ रहे हैं? 55-60 मिलियन की आई गेस डील प्रॉब्ली हुई है, वो क्यों की है भाई? उसको नेक्स्ट सीजन लाएंगे, आई थिंक 2024 में ही विल बी कमिंग इन जनवरी, और रजिस्टर भी उसको कर लिया जाएगा। आई थिंक लेवेंडोस्की नेक्स्ट सीजन अगर हुआ तो लेवेंडोस्की नेक्स्ट सीजन जा सकता है, लेकिन इन माय ओपिनियन दिस सीजन इट इज लुकिंग वेरी अनलाइकली। एंड लेट्स कम बैक टू आवर रिपोर्ट ऑन द किलियन एम्बापे, जो अब मैं ये रिपोर्ट से बंद कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली मैं अपना आपको स्ट्रीम पे रख देता हूँ। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, अच्छा क्या बोल रहे हो आप? रॉबर्ट लेवेंडोस्की ब्रो हैव सम सेंस, गो बैक टू बायर्न, यू वर गुड देयर। आई थिंक बायर्न अब नहीं लेती इसको, अब तो बायर्न नहीं लेती कभी भी। बायर्न आर लुकिंग गोइंग आफ्टर हैरी केन, एंड आई थिंक दे विल नॉट बी signing
रॉबर्ट लेवेंडोस्की बैक इवेंचुअली, कुछ सेंस ही नहीं बनाती ना अब ये चीज़, कुछ सेंस ही नहीं बनाती। जब बायर्न से उसका रिलेशनशिप ही बिल्कुल ख़राब हो गया, उसने पता नहीं क्या-क्या करना शुरू कर दिया था। आई थिंक ट्रेनिंग उसने मिस करना शुरू कर दी थी टू साइन फॉर बार्सिलोना इवेंचुअली। सो पता नहीं यार क्या होगा, लेकिन लेवेंडोस्की आई थिंक नहीं जाता है इस सीज़न तो। चेल्सी आर रेडी टू मेक मूव फॉर रोमियो लाविया एंड इवन प्रिपेयर टू टेबल अ हायर ऑफर देन लिवरपूल। Lavia is currently still sold on Liverpool. At this stage, a move to Anfield remains more likely. यार चेल्सी का मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर ये रिपोर्ट सही है तो मुझे इसका वो भी देना, इसका क्या बोलते हैं अपना सोर्स भी देना, मैं उससे पहचानूंगा कि क्या है। लेकिन अगर रोमियो लाविया के लिए चेल्सी आर ट्राइंग टू पे सम हायर प्राइस जो कि लिवरपूल ऑफर कर रही है, 50-55, लिवरपूल इज ऑफरिंग 42-43 मिलियन और 50 मिलियन की डिमांड है साउथहैम्पटन की। इफ दे आर लुकिंग टू फुलफिल साउथहैम्पटन्स डिमांड, तो मोइसेस काइसेडो उठा लो ना यार। मोइसेस काइसेडो इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड, मच मोर आपको वर्सेटिलिटी देता है आपको। Eventually he can fit into the Mauricio Pochettino system as well. So why not paying a 5 to 10 million add-on fee for Moises Caicedo rather than going for Romeo Lavia, जो कि आपको आई थिंक लिवरपूल के सिस्टम में ज्यादा फिट बैठता है इन माय ओपिनियन। हाँ, चेल्सी के सिस्टम में बैठता है। चेल्सी ने भी, चेल्सी इज द ओनली क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने ही पढ़ा था कि जो उसको रोमियो लाविया को साइन कर सकती है, लिवरपूल को टक्कर दे सकती है। जैकब्स बेन, अच्छा बेन जैकब्स की रिपोर्ट आई थिंक सही है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे बिलीव नहीं करो। टॉप टियर जर्नलिस्ट नहीं है ये बंदा वैसे इन माय ओपिनियन। सो ब्राथवेट कोविड हीरो फॉर बार्सिलोना, यार यार काफी ओल्ड मेमोरीज रही हैं उस बंदे की तो, मार्टिन ब्राथवेट की। अब वो पता नहीं किधर गया, आई गेस स्पेनियोल गया था, स्पेनियोल से वो फिर वापसी कहीं चले गया, पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन स्पेनियोल गया था इन माय ओपिनियन वो तो, मुझे याद जहाँ तक याद है। लेकिन आई डोंट रियली फॉलो बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडोज, तो मुझे नहीं पता। लेवेंडोस्की इज नॉट बायर्न म्यूनिक लेजेंड, he missed trainings and gave many interviews in public. That's what I said कि यार डिस्पाइट द फैक्ट कि कितना करीब आ गया बैलन डोर जीतने के, कितने टाइम उसने चैंपियंस लीग में उसने हेल्प की थी जीतने में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बिहाइंड क्लोज डोर्स जीती थी बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग 2020 की। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक दैट मेड सेंस इवेंचुअली इन माय ओपिनियन। और ही आई थिंक डज नॉट रिमेन्स एज अ लेजेंड। आप मान भी सकते हो there would be a division between the fan base, there might be a division between the fan base in my opinion, Bayern fan base, कि वो कुछ मानते भी होंगे लेजेंड इनको और कुछ नहीं भी मानते होंगे। जैसे यूनाइटेड में है, काफी फैन बेस मानती है कि यार डेविड डे इज अ लेजेंड, एंड काफी फैन बेस मानते हैं कि ही इज नॉट अ लेजेंड। तो दैट्स योर ओपिनियन इन माय ओपिनियन। एरिक टेन हैग, ब्रो लीव अमराबाट, ही वांट्स टू प्ले फॉर एटीएम, डोंट प्ले मनी गेम। नहीं यार, अमराबाट है, एटलेटिको मैड्रिड नहीं आता। एटलेटिको मैड्रिड, आप एटलेटिको मैड्रिड फैन हो तो मुझे ये बताओ कि मार्को वेराटी की डील का क्या हुआ। मार्को वेराटी की डील भी तो बन रही थी, लेकिन अब अल हिलाल, आई थिंक हाँ अल हिलाल से कॉन्क्रीट ऑफर आ गई है, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि एटलेटिको मैड्रिड वुड बी पेइंग एनी हाई ऑफर देन। तो मनी बैक जब प्लेयर को दिख जाता है तो अल्टीमेटली उसको कुछ और नजर नहीं आता। लेवेंडोस्की इज नॉट, अच्छा अपने अपन ने कर लिया एड्रेस। भाई मेरी दीदी बार्सिलोना फैन है और उसकी मेरी बनती नहीं है। यार क्या बोल सकते हैं अभी आपको हम, उनकी उनकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है इवेंचुअली, तो खैर है यार। अब ऐसा भी नहीं करना कि उनसे लड़ाई कर लो और उसमें। तो आई थिंक मेरे को ऑनेस्टली आज भी लेवेंडोस्की को किसी और जर्सी में देखना अच्छा नहीं लगता। हाँ आई थिंक बायर्न के लिए अच्छा था, आई थिंक वो अपना करियर बायर्न में एंड करता इवेंचुअली, एज अ लेजेंड जाता प्रॉब्ली, अगर बैलन डोर पे एक कैचअप लगा भी लेता, और इवेंचुअली बायर्न को याद भी आई लेवेंडोस्की की पिछले सीजन इवेंचुअली। आई थिंक जो बायर्न डॉर्टमंड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी इवेंचुअली, और चूपो मोटेंग डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने अच्छा किया सीजन में, गोल्स निकाल के दे दिए, लेकिन आई थिंक वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाया जो आपको रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने प्रोवाइड की थी सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन माय ओपिनियन। और यार ये चीज़ आप कह सकते हो कि लेवेंडोस्की इन माय ओपिनियन नीड्स टू, अब अपना वही इसका करियर आखिर का है कि अब 2-3 साल का करियर है, 2 साल का प्रॉब्ली बार्सिलोना में स्टे करेगा वो, और फिर ही माइट लीव टू सऊदी, और ऑफर आएगी जो भी अल हिलाल की। तो अब एम्बापे के ऊपर बात करते हैं। एम्बापे आई थिंक मुझे अब फील तो हो रहा है कि यार मैंने तो ये भी डाल दिया था कि बुक मार्क दिस ट्वीट, और 10 अगस्त से पहले एम्बापे आ रहे रियल मैड्रिड। मैंने तो ये काफ़ी बोल्ड प्रेडिक्शन डाली है अपनी। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा, मैं तो बिलीव रखता हूँ कि एम्बापे आ रहे, और इसी सीज़न आ रहे। यू गाइज, पता नहीं आपको लगता नहीं लगता, लेकिन जो भी लोग हमें देखेंगे
आप लोग देख रहे हो, मुझे पता है, हमें अभी सिर्फ 2 ही लोग हम लोग स्ट्रीम पे बातचीत कर रहे हैं, 2-3 लोग ही हैं। तो जो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो लोग भी देखेंगे स्ट्रीम आफ्टर आई फिनिश्ड इट, सो डू सब्सक्राइब टू दिस स्ट्रीम। चलो 300 तो पहले करा दो यार, 10 सब्सक्राइबर्स रहते, 300 करा दो, देन इवेंचुअली हम आगे बढ़ेंगे 500 के लिए भी। तो लाइक भी कर दो स्ट्रीम को, और कमेंट्स भी देखो, एड्रेस सबके कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली वील हैव अ हेल्दी डिस्कशन आई थिंक, इन माय ओपिनियन। और अगेंस्ट मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख मिस्ड लेवेंडोस्की, या मिस किया था, वो गोल स्कोरर, वो थ्रेट मिस किया था ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली यार मिस तो करेंगे यार, एम्बापे इस सीजन आएगा, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं आई थिंक, मुझे पता है मैं जिंक्स का मास्टर हूँ। आप देखना, मैं आज बोल रहा हूँ, मैं बात से अपनी मुकर भी जाऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन आई थिंक मुझे मुझे लग रहा है आ रहे हैं एम्बापे। क्यों ऐसा लग रहा है? लेकिन मैंने जो रिपोर्ट्स, इनसाइड रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं काफी ज्यादा, काफी, मैं आपको पता है, मैं एम्बापे की रिपोर्ट्स के ऊपर तो मैं ना घुस चुका हूँ अंदर इतना, कि मैं इतना पढ़ाई में नहीं होऊंगा, इतना मैं स्टडीज में अपनी नहीं होऊंगा, जितना मैं एम्बापे की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन आई थिंक आ रहा है एम्बापे इस सीजन, जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है। अगर एम्बापे वांट्स के भाई वो उसको बेंच पे बैठना है, तो वो बैठ जाएगा। लेकिन आई थिंक अगर उसको खेलना है, अपनी उसको लेगेसी बरकरार रखनी है एट इन फुटबॉल, और उसको एर्लिंग हालैंड की उसमें करना है, तो यार पता नहीं, मुझे मुझे ऐसा फील आता है कि यार फिर आ जाएगा, अगर वो उसको अपना एम्बिशंस के ऊपर ज़्यादा यकीन है, उसको अपने एम्बिशंस के ऊपर ज़्यादा विश्वास है, तो वो आ सकता है इन माय ओपिनियन। क्योंकि एम्बिशंस ही हैं जो कि उसको रियल मैड्रिड खींच के लाएंगे। अगर उसको रियल मैड्रिड आना है, तो अपना डिसीजन उसको बनाना पड़ेगा। पीएसजी तो चलो, पीएसजी ने अब उसको ऑब्वियसली ट्रांसफर लिस्ट कर दिया है, पीएसजी ने उसके साथ रोना धोना शुरू कर दिया। लेकिन एम्बापे भी यार हीरो, ऐसा हीरो पोर्ट्रे करना चाहता है ना अपने को, ऑब्वियसली, क्योंकि वो फ्रेंच मैन है, और प्रोबेबली उसको हेट मिलेगी जब वो फ्रांस दोबारा आएगा, पेरिस आएगा, पेरिस उसका होम टाउन है। तो आई थिंक वो हेट नहीं लेना चाहता वो चीज, और इवेंचुअली दैट इज द रीजन कि वो इतना अभी भी हिचकिचा रहा है कि मैं रियल मैड्रिड जाऊं इस सीजन। लेकिन ऑनेस्टली हम सबको पता है 24 में तो देखो आने वाला है, 24 में तो पक्का आ रहा है रियल मैड्रिड। वो कोई, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एंड्रिक और एम्बापे दोनों आएंगे। एंड्रिक आई गेस अभी स्टार्ट नहीं करेगा, वैसे एंड्रिक को प्रॉब्ली कैस्टिला एक सीजन हम देख सकते हैं खेलते हुए, और उसके बाद वो आ सकता है प्रॉब्ली, या फिर डायरेक्टली उसको फर्स्ट टीम में डाला जाएगा और स्क्वाड में डाल के उसको खिलाया जाएगा आई थिंक। और एम्बापे ऐसा लगता है मेरे को कि वेन फिल फिल वेल फिन की 4 साल की सब्सक्रिप्शन देना चाहूंगा, सेम एज बारसा इज गिविंग 1 ईयर स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन। यार नहीं यार, ये बैड है यार, 1 ईयर स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन विद एम्बुलेंस, लेवन डिज्नी, गावी यार नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। जिंक्स लगा दो भाई, जावी सैक हो जाएगा इस सीजन। अरे नहीं भाई, यूरोप में अच्छा, यूरोप में रहने दो, यूरोप में आगे नहीं बढ़ेंगे ना, कह रहे यार, ला लीगा तो चलता रहता है, यूरोप में नहीं आने चाहिए। टैग हो गया तो फिर भाई कोई ऐसा मैनेजर आ गया तो वो यूरोप में उनको आगे पहुंचा देगा। वेल फिन इंश्योरेंस कंपनी है, 4 साल का लाइफ टाइम इंश्योरेंस। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। तो यार अब एंड करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम। आप लोग ने जितना बैंग बैंग भाई ने आप आए इवेंचुअली, हमने काफी ज्यादा डिस्कशंस की, एंड गुरशन भाई वाज विद अस एज वेल, जस्ट स्पोर्ट्स, डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल एज वेल। सो अब तो आरएम पे भी सही से स्ट्राइकर आने वाला है। अब तो लाहोविच ले लो यार, पता नहीं क्या होता है लाहोविच का। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि लाहोविच आएगा अब रियल मैड्रिड। इन माय ओपिनियन लाहोविच की तो कोई लिंक ही नहीं है रियल मैड्रिड से, और वो इधर उधर ही जाएगा, चेल्सी प्रॉब्ली, या कहीं ऐसे वैसे क्लब में जाएगा, कोई लिंक आएगा, या पीएसजी में आ सकता है वो, इन माय ओपिनियन। तो दैट इज इट। कभी कभी मुझे भी लगता है डाउट, एम्बापे रोनाल्डो और रियल मैड्रिड फैन नहीं है वो, उसके रूम्स की पोस्टर सब फेक है। नहीं नहीं यार, फेक नहीं है। उसने रोनाल्डो के साथ उसने वो मैड्रिड की स्ट्रीट्स पे घूमता रहता था यार विद जिदान, उसने जिदान से इतनी मुलाकातें की, उसने इतनी बातचीत की है, रोनाल्डो के साथ उसने पिक्चर ली है। रियल मैड्रिड की 2013 में इन माय ओपिनियन बी टीम या किसी चीज के लिए उसने खेला भी था, कुछ एक मैच भी खेला था जिसमें अच्छी अच्छी वो दी थी उसने। तो पता नहीं यार, लेकिन एम्बापे आता है, मुझे ऐसी फील आती है, गट फील आती है कि एम्बापे आता है। तो दैट इज इट फॉर दिस। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लाइव स्ट्रीम। वी हैड very much good discussions, a bit in Hindi and Urdu as well, and eventually in English as well. We discussed very things in all the languages eventually, कि सबको फायदा उस चीज का सब अंडरस्टैंड कर सकें। So that is it for this. I hope you guys enjoyed this, and we'll be
back with another live stream tomorrow, and we might have some guests tomorrow as well. So thank you so